Hello everyone, my name is Nancy Gupta. Today we shall discuss chapter Bohr's model and physics of the atom. Before starting with the topic, please subscribe to my channel Nancy Study Hub. So let's get started. Now let's start with early atomic models. Early atomic models, starting with Robert Boyle, an English scientist who studied the compression and expansion of air. That is, he studied that there is space or certain spaces between air molecules, and that space is said to be atoms. Fact, when air is compressed, these particles get closer to each other, reducing the empty space. So, when air is compressed, these particles get closer to each other, reducing the empty space. Conclusion: the smallest unit of an element which carries all the properties of an element is called an atom. मतलब कि एक छोटा से छोटा एलिमेंट जो कि पूरे एलिमेंट की प्रॉपर्टी को कैरी करता है. फॉर एन एग्जाम्पल, हमारे बॉडी में बोन्स हैं, तो उस बोन्स की स्ट्रेंथ से हमें पता चल सकता है कि हमारे बॉडी में कितने स्ट्रेंथनेस है, राइट? उसी तरीके से द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ एन एलिमेंट विच कैरीज ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ एन एलिमेंट इज कॉल्ड एन एटम. An atom is unit of matter, the smallest unit of an element. Now let's continue with Thomson's model of an atom. Thomson's atomic model. जैसा कि आपको पता है कि हर एटम के अंदर न्यूक्लियस होता है और न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स होता है और प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स दैट इज न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं. So, as per Thomson's model, atom is a positively charged solid sphere and electrons are embedded in it in sufficient number to make atoms neutral. मतलब overall जो atoms होते हैं आपके वो neutral होते हैं, ठीक है? उसके atoms के अंदर चारों तरफ न्यूक्लियस के चारों तरफ नेगेटिवली चार्ज्ड इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, तो इट मेक्स द एटम एज अ होल ओवरऑल न्यूट्रल. It could explain why only negatively charged particles are emitted when a metal is heated and never the positively charged particles. ये कभी भी explain नहीं कर पाया कि क्यों सिर्फ हमारा negatively charged electrons ही emit होता है, ना कि positively charged particles. It could also explain formation of ions and ionic compounds. Limitations of Thomson's model. It failed to explain how the positive charge holds on electrons inside the atom. It also failed to explain an atom's stability. The theory did not explain anything about the nucleus of an atom. मतलब कि जो थॉमसन्स मॉडल है वो न्यूक्लियस ऑफ एन एटम के एग्जिस्टेंस को नहीं एक्सप्लेन कर पाया. It was unable to explain the scattering experiments of Rutherford. So let's get started with Rutherford's model of an atom. Every atom is uniformly positively charged of sphere of radius 10 raised to minus 10 meter, that is of the order of nanometer, in which entire mass is uniformly distributed and negatively charged electrons are embedded randomly. The atom as a whole is neutral. मतलब कि हमारा ओवरऑल जो एटम होता है वो न्यूट्रल होता है. एटम के अंदर सेंटर में न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के चारों तरफ इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करता है. सो आप सोचो तो अगर हम बोल सकते हैं कि हमारा जो एटम है इट्स ऑलमोस्ट लाइक जस्ट लाइक अ वाटरमेलन. वाटरमेलन के जो अंदर सीड्स होता है दोज आर इलेक्ट्रॉन्स, और जो रेड वाला पल्प होता है दैट रेड पल्प कैन बी कंपेयर्ड एज positive charge. So this is the overall diagrammatic structure of Rutherford's model of an atom. ये हम कैसे समझेंगे? हम समझेंगे इसको एक गोल्ड फॉइल और अल्फा रे स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट से. सबसे पहले क्या करेंगे, हमने एक गोल्ड फॉइल लिया है,
ठीक है, उससे हम अल्फा पार्टिकल को स्कैटर करेंगे। हमें जैसे कि पता है कि हमारा एटम है उसके सेंटर में न्यूक्लियस होता है, इसीलिए सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन हमारा सेंटर ऑफ द एटम में ही होगा, और जैसे जैसे हम न्यूक्लियस से दूर जाएंगे वैसे वैसे डिफ्लेक्शन छोटा होता जाएगा। मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स जस्ट पास थ्रू स्ट्रेट, ठीक है, बिकॉज अगर हम न्यूक्लियस से ऊपर जाएंगे तो ऑलमोस्ट वो एम्प्टी स्पेस होता है, और उस एम्प्टी स्पेस से तो हमारा अल्फा पार्टिकल्स स्ट्रेट अवे पास कर जाएगा, और जहां जहां इलेक्ट्रॉन्स होंगे वहां पे स्मॉल डिफ्लेक्शन हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द स्कैटरिंग ऑफ अल्फा पार्टिकल्स बाय द एटम्स ऑफ अ गोल्ड फॉइल। On the basis of this experiment, Rutherford made the following observations. The entire positive charge and almost entire mass of the atom is concentrated at its center in a very tiny region of the order of 10 raised to minus 15 meter called nucleus. तो हमारा जो पूरा का पूरा पॉजिटिव चार्ज जो है एंटायर मास ऑफ द एटम कहाँ पे होता है, हमारे एटम के सेंटर में होता है, ठीक है, और उस सेंटर का मास जो होता है वो जनरली 10 रेज टू माइनस 15 मीटर के रेंज में होता है। The negatively charged electrons revolve around the nucleus in different orbits. तो आपका मान लीजिए न्यूक्लियस है, तो न्यूक्लियस के चारों तरफ ऑर्बिट्स होते हैं और उन ऑर्बिट्स में आपके इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं, and those electrons are negatively charged. The total positively charged on nucleus is equal to total negative charge on electron. Therefore, atom as a whole is overall neutral. Now you know the electrons revolve around the nucleus. So the centripetal force is required by electron for revolution, and it is provided by electrostatic force of attraction between the electrons and the nucleus. So we have already discussed postulates of Rutherford's atomic model, that an atom is composed of positively charged particles, और सबसे ज्यादा तो mass of the atom जो होता है वो small region of the nucleus में concentrated होता है. So this is the overall structure of the atom, जिसमें बीच में सेंटर में न्यूक्लियस होता है जिसके अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, and it contains maximum mass of the atom and electrons are revolving in fixed orbits. So atom's nucleus is surrounded by negatively charged particles called electrons, and those are orbits. So let's discuss about distance of closest approach. आपको पता है कि न्यूक्लियस से जैसे जैसे डिस्टेंस दूर होता है वैसे वैसे स्मॉल डिफ्लेक्शन होता है, राइट, और न्यूक्लियस जैसे जैसे थोड़ा सा ऊपर जाओ वहां पे मोस्ट ऑफ दी जो आपका अल्फा पार्टिकल्स है इट्स स्ट्रेट अवे पास थ्रू, और न्यूक्लियस के पास सबसे ज्यादा डिफ्लेक्शन होता है, मैक्सिमम डिफ्लेक्शन। तो जैसे जैसे दूर होता है मतलब डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट अप्रोच बढ़ता है, वैसे वैसे आपका क्या होता है, when the alpha particles moves towards the nucleus, its kinetic energy keeps on decreasing because kinetic energy is being consumed in doing work against the force of repulsion of the nucleus, because nucleus के पास maximum mass concentrated होता है, तो उस फोर्स से ओवरकम करने के लिए उसका काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज हो जाता है. So the distance from the nucleus at which velocity of alpha particle becomes zero is known as distance of closest approach, and this is the formula for distance of closest approach. Here you can see this is the distance, this is the nucleus, and distance from the nucleus as it goes farther from the nucleus. So that is distance of closest approach, also known as impact parameter. So thank you. That's all for the day. We will come in next class. Please subscribe to my channel, Nancy Study Hub. Bye bye. Take care. See you.